Om Stapakaya cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varishthaya Ramakrishnaya Te Namaha Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Sritva Pranamami Muhurmu Namasri Edirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukasvarupaya Swamini Tapaharini Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Today we are beginning our Gita class. Idea was to hold it every Sunday morning between 10:30 to 11:30. लेकिन पहले दिन इतनी बरसात, probably nobody to come except one devotee was come in spite of all the rain. So the rest are attending it online. Anyway, after all, the Gita was given by Sri Krishna to Arjuna, who was alone. There was no one else. It was given to him only. So the number is not important. Even if one person really benefits from the discussions on Gita, then it is worth doing it. Actually, Shankaracharya, from his time, the Bhagavad Gita perhaps even recognized one of the three authoritative and basic source books, what they call as Prasthanatraya. कोई अपना मत स्थापना करना चाहते हैं, if anyone wants to establish his own philosophy, he has to write a commentary on all these three, Bhagavad Gita, Upanishads, and the Brahma Sutra. But I think this tradition started from Shankara, the great Shankaracharya, was the first person probably who lifted this Bhagavad Gita from the ocean of Mahabharata and fixed the verses as 700 and also wrote a wonderful commentary. So actually, it's very difficult to discuss about the date of Bhagavad Gita, etc., etc. But the one view is that it relates to 150 BC, although there is not much evidence for it. So Sri Krishna, the Purnavatara, has given this wonderful text to humanity through his friend and disciple Arjuna at a very crucial moment in his life, and it has been put into its present form by Krishna Dvaipayana Vyasa. So the Gita is considered the essence of the Upanishads, etc. Because again we'll see this verse in the Dhyana Sloka, because it says, Sarvopanishadu Gavo Dogdha Gopalanandana Partho Vassa Sudhir Dogdha Dugdam Sudhir Bhokta Dugdam Gitamritam Mahat. So it is really considered as the essence of the Upanishads, etc. So we will see as we go along. The beauty of Bhagavad Gita is, it starts from a very familiar, rather a situation which is quite common in the world, and it appeals to the conscious of the spiritually sensitive sections of humanity everywhere, irrespective of their religious affiliations. Probably, even those belonging to other religions can really benefit much from reading the Bhagavad Gita, because instead of Sri Krishna, perhaps they will have to substitute their own gods and goddesses, and that way, in some way or other, they can all get linked to this wonderful text
and benefit from it. So the Gita teaches human beings the goal of mankind and the means for attaining it. What is the real ultimate goal? The goal is the supreme personal, impersonal Brahman, and the means are knowledge, work, psychic control, and devotion. Any of the four yogas or any of the four paths one can select, but then the ultimate goal is whether you can think of the supreme personal God or the supreme impersonal idea. Both are equally applicable, and you find both being extolled and given as the ultimate goals to humanity. So there have been, several commentaries have been written. Gita itself, I think there are large number of English translations, something like close to 50. It's also been translated in other languages. Now we know the acharyas, whoever took it up, Samuel Shankara has interpreted completely from the Advaitic point of view, Ramanujacharya from his own Vishishtadvaita point of view, and Madhva from the Dvaita point of view, which clearly shows that there is enough for everybody. In fact, somewhere he says, Sri Krishna, a non-believer, even a person who has done enormous amount of sinful actions, even he can be redeemed, he says. Apiche sudaracharo bhaktiyama mananya bhav. Sadhureva samantepya. Such person is to be considered as a sadhu because he has turned a new leaf. इसीलिए गीता सबके लिए है, और जो पथ आपका सुविधा है, whether you want to go along the path of jnana or bhakti or psychic control or work, जो भी आपका पसंद है, जो भी आपका स्वभाव के अनुसार है, आप इस पथ पर चल सकते हैं. So actually, because it's a universal scripture, there is something for everybody, and anyone can take up a practice which is close to his nature and progress. So actually, if you see the overall point of view in the Gita, if you try to look at it, probably it comes closest to Swamiji's definition, where Swamiji says each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, worship, philosophy, or psychic control, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines and dogmas, rituals or books or temples or forms are but secondary details. So, in the same way, the Gita also talks about attaining the highest goal of life by any of the paths, and then, the other things are all not so necessary, or they are only of secondary nature. So, so many translations of Gita are there, and that shows the popularity of the work, and also how spiritual seekers have referred to this text time and again. In fact, there are many who swear by the Bhagavad Gita. There are some traditions which have built up on the Bhagavad Gita alone. They don't talk of any other scripture, so to say. So powerful is its appeal. So then, comes the meditation on the Gita, the very beautiful Dhyana slokas. We should try to see some of them. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते Bhavatveshinim. Oh, blessed Mother Bhagavad Gita,
who is the destroyer of samsara. Bhagavad-gita Bhavatveshini, who destroys this Bhavasagara, Bhavasamsara. So, the goddess, this mother goddess, this was imparted to Arjuna by Narayana himself. Parthaya Pratibodhitam Narayanena Swayam. And it was recorded in the Mahabharata, Vyasina Grititam Purana Muninam Madhye Mahabharata. By the ancient sage Vyasa, he placed it in the Mahabharata. What does it contain? This Gita showers Advaita Amrita Varshini. This is a shower of Amrita of the Advaita, the nectar of Advaita. Bhagavad Gita Ashtadasayana. It consists of 18 chapters. So this is the greatness of Bhagavad Gita. And it says, Namostu te vyasa vishala buddhe fullar vindaya tapatra netra yenatvaya bharata taila purnaha rajvalito jnanamaya pradipaha. Namostu te vyasa. This is salutations to Vyasa, Vishala Buddhe, of mighty intellect, Fullara Vindaya Tapatri, whose eyes are large like the petals of a full-blown lotus. Enatvaya Bharata Taila Purnaha, thou who lit the wisdom lamp, Prajvalito, Jnanamaya Pradipaha. You lit the lamp of knowledge with the oil that is Mahabharata. Prapanna parijataya totra vetraika panaye jnanamudraya krishnaya Gitamritaduhe namaha. So, these salutations to Krishna, who is a veritable wish-yielding tree to all the surrendered ones. Prapanna parijataya. Parijata, it's like a kalpavriksha. Totra vetreka panaye, who one hand holds a cane to drive the cows or the cattle. Jnanamudraya Krishna, while on the other hand, he has the Jnanamudra. Gitamrita duhe namaha is a milker of the nectarine milk, that is Bhagavad Gita. This is the important sloka. Next one. Sarvopanishado gavo Dogdha Gopalanandanaha Partho Vassa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahat. The Upanishads, Sarvopanishado Gavo, all the Upanishads are cows. Dogdha Gopalanandana. The person, the cowherd son Krishna is the milker, Gopalanandana. Partho Vatsa, Arjuna is the calf. Sudhir Bhokta, it is enjoyed. Dugdham Gita Amritam Mahat is great. Gita is the Dugdha, Amrita. And the pure-minded Sudhir Bhokta, they are the people who enjoyed. Sudhis, the great ones, or the pure-minded, are the people who are the drinkers of this milk. Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Vasudeva Sutam Devam is the son of Vasudeva, and he is the destroyer of Kamsa and Chanura, is a great delight of Devaki. And Krishna Vande Jagatnam. He is the Jagat Guru, the teacher of the world. I salute that Krishna. So it goes on. There are so many interesting verses. And then it Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripa tamaham vande Paramananda Madhavam. Paramananda Madhavam Tamaham Vande. I salute Madhava, the supremely blissful one, whose grace, Yat Kripa, Mukam Karoti Vachalam. The dumb person becomes eloquent, and a lame person crosses over mountains.
Mukam karoti vachalam, pangum langhayate girim. So, by the grace of Sri Krishna, the supremely blissful one, the dumb can become eloquent and the pangu or the lame ones can cross the mountains. Yam Brahma Varunendra Rudra Marutah Sunmanti Divyai Stavai Vedai Sankapada Kramopanishadai Gayanti Yam Samagaha Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yogino Yasyantam Navidusura Surakana Devaya Tasmai Namaha. Devaya Tasmai Namaha. My salutations to the Supreme Being, whom Yam Brahma Varuna Indra Martaha Suvanti Divai Savai. Brahma, Varuna, Indra, Rudra glorify by divine hymns. Vedai Sanga Pada Kramopanishadai Gayantiyam Samagaha. O singers of Sama praise by chanting Veda with all the other complementary parts, sections and Upanishads. Dhyana avastita tadgatina manasa pashyantiyam yogino. Yogis with their minds completely concentrated in meditation and who limit neither the hosts of devas nor the asuras. No. So that is the beauty of Sri Krishna. He is saluted in this because he says only with the people, with the yogis in deep meditation, they have a vision of him through their meditation and the deep absorption. So now let us look at a little of the introduction. What is the reason for this such a wonderful appeal of this Bhagavad Gita? It's because it is set in a surroundings which is very very familiar, and it is something in a way it's symbolic of the internal conflict or the problems which humanity faces. The yuddha or the battlefield is just symbolic of the war that is waging in our minds constantly, because every day we are beset with so many problems. So by it is necessary to find a solution. And Sri Krishna, by advising Arjuna how to overcome the dilemma, actually has delivered a wonderful message to the entire mankind. So, the secret of the tremendous appeal of the Bhagavad Gita, इसके लिए इतनी आकर्षण क्यों है? Because it deals with a practical problem of life. How a person could discharge his duties as a member of an imperfect social order and at the same time realize his highest spiritual destiny. So you see, according to the Vedas, etc., whatever was revealed, the highest destiny of man or a human being is to realize his own supreme oneness, or even the realize or have the vision or the realization of the God whom he worships. But functioning in a world which is so full of problems and difficulties and inconsistencies, how is it possible for such a person to discharge his duties? Being a member of this duty, everyone has to discharge one's duties. We all feel this problem. We would like to do. Obviously, we are participating. But every involvement seems to bring in a lot of other problems, conflicts. Every day, constantly, we are struggling with all this. How to handle all this? How to overcome all this? So, that way, Gita seems to give a wonderful solution, because the very problem of Arjuna is a problem of you, me, and everybody else. Probably it's in another shape, but essentially, मूल तो वही है ना. हम सभी वैसे जूझ रहे हैं. जो अभी कुछ करना पड़ता है, करते भी हैं, लेकिन जिस परिसर पे करना पड़ता है वो सुविधा नहीं लग रहा है. कई बार हम लोग नहीं करना चाहते हैं, फिर भी करना पड़ता है.
इसीलिए गीता के माध्यम में आप ऐसे ही कोई एक समाज में रह के अपना कर्तव्य निभाएंगे, साथ ही साथ आपका जीवन में जो परम प्राप्ति, परम लक्ष्य जो उपलब्ध करना है वो भी कर लेंगे। यही गीता दे रहा है। इसीलिए गीता it begins with an ethical problem, and in solving this problem it has probably given a wonderful philosophy of life which can be used by everyone to reach the summum bonum of life. So the what is the initial problem? That is graphically described as the predicament of Arjuna. इसीलिए तो पहला चैप्टर का विषाद योग कहते हैं। वो देखिए उनका इतना बुरा लगता है। अर्जुना इज द लीडर ऑफ द पांडवस एंड हिज होल लाइफ क्या किया उन्होंने, ऐसे युद्ध करने के लिए तो खुद का तैयारी करा था। He had prepared himself all his life to fight such a war and get back the kingdom which the Kauravas had forcibly taken away from the Pandavas. So obviously he has been made the leader of the army and is supposed to fight and win and get back the kingdom. Then the critical moment he realizes it's a war between brothers. It is a fratricidal war, and then the consequences will be the destruction of the very friends and acharyas and relatives and other people. Normally कैसे ऐसे कोई युद्ध में विजेता प्राप्त करके क्या करते हैं, क्यों विजेता प्राप्त करना चाहते हैं? अपना स्वजन, अपना कुटुंब, जब मित्रों, सबके लिए तो। But if you are going to destroy all your friends and relatives and acharyas etc., for whom are you going to fight this war? साधारण जिनके लिए हम सब ऐसे प्राप्त करना चाहते हैं, people acquire wealth and all that, why? To serve their dear and near ones. लेकिन इस युद्ध की माद में सबको विनाश पहुंचा दें, if all of them are destroyed, what is the point of winning such a war? So it was really it was a great dilemma in his mind, and suddenly a war weariness and a world weariness. युद्ध का बिल्कुल करना महीन लगता था, और इस जगत के प्रति भी उनका एक अनीहा, एक से क्या है, ऐसे उन्होंने अनुभव किया। तो उन्होंने अपना उस समय कर्तव्य जो खुद के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, सब उन्होंने भूल गए। And he thought that he will take to the life of an ascetic, and instead of a senseless carnage or a war in the name of Swadharma, he thought that let me become a absolutely withdrawn person and pursue something else. So see, here actually what exactly is the conflict? It's a sudden, and very purely personal inclination bursting upon one's mind and social duty, the avoidance of which under that inclination would have meant ruin to a whole community that had trusted Arjuna. See, अर्जुना का उनका खुद का जो समस्या था, उस समय उन्होंने अपना कर्तव्य, समाज का कर्तव्य सब भूल के वो ऐसे ही युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसका क्या परिणाम होता था? सारा जो इतनी लोग, समाज, सब अर्जुन के ऊपर इतना विश्वास करके उनके ऐसे नेता बनाया था, all would have been ruined. And not only that, if the Kauravas had won the war, that would have been the triumph of adharma over dharma. क्योंकि कौरवरा तो ऐसे कोई अन्याय भाव से जो छीन लिया था। They had taken away the land, the kingdom of the Pandavas in an unlawful manner. So कौरव का कौरव विजेता प्राप्त होते थे, then probably it would have been the triumph of adharma over dharma. That's why in the first sloka itself, Gita begins, dharma kshetre kurukshetra समवेता धर्म के लिए लड़ाई। ऐसा कोई सिर्फ राज्य प्राप्ति के लिए नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, what is to be done, what is not to be done, to understand fully the sense of dharma. So it's not mere war for winning a kingdom or a land or something like that.
इसलिए से बहुत गहरा है। क्यों? ये धर्म युद्ध है। सो अर्जुन ऐसे युद्ध नहीं करते थे, सो कौरव विजेता प्राप्त कर लेते, एंड इट हैव बीन अ वेरी टेरिबल कॉन्सिक्वेंस। सो एट दिस पॉइंट श्री कृष्ण, तो अर्जुना कई बार सखा भी कहते हैं, उनका रथ भी चला है, वॉज अ चैरिटियर एंड स्पिरिचुअल काउंसलर। So he asked him and to resolve the conflict in Arjuna's mind and restore in it a sense of moral equilibrium by funding a new sanction for action. अभी ऐसे काम करने के लिए जिस युद्ध में उनका अपना आचार्य, अपना मित्रों का, अपना कुटुंब का, सबको जो मारना, सबको ऐसी कोई मृत्यु पहुंचाना, हाउ दैट इज जस्टिफाइड, इसके लिए उनका कुछ नया बताना पड़ा था। Sri Krishna had to teach him something new. So it was a long dialogue for 700 slokas or so. At the end of it, really, Arjuna accepts whatever Sri Krishna said, and he completely surrenders to him, so to say. But then he was being slowly prepared over that entire period to accept the inexorable nature of work in the life of a person and the utter futility of Arjuna to withdraw from life of action. Because you see, अर्जुन जितने भी प्रयास करते थे ऐसे बोल रहे थे, लेकिन उनका स्वभाव ही उनका युद्ध करने के लिए बाध्य करता था. It would have forced him to act because that was his nature, because we are all parts of Prakriti. So is this product of Prakriti. Action is the life for mind and the body. Okay, Prakriti so kriyavan hai, always as a product of Prakriti. So we have to constantly act, and the very process of living is not possible if there is no action. हम तो कुछ करने के लिए, रहने के लिए, कुछ खाना पीना वो भी एक्शन ना, श्वास लेना वो भी एक्शन है. इसलिए कुछ करके बिना जीवित रहना भी संभव नहीं है. So then आप ऐसे कुछ नहीं करते हैं, then one can become idle, and it can be under the false impression of a spiritual greatness. That will be only rank hypocrisy and spiritual stagnation. कई बार होता है, कोई करते हैं मन, किसी को मन करता है थोड़ा आध्यात्मिक दिशा में, and suddenly they think that I will not do anything. Work is a bondage, work is a hindrance. कुछ नहीं करता, चुप बैठ रहता हूँ. But चुप बैठ रहने में नहीं होता है. Because even if you are, that's why all will be very clearly discussed by कर्मेन्द्रियाणि संयमे यास्ते मनसा स्फुरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते. आपकी आत्मा सब आप घुटा के बैठ रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप हजार गुना कुछ करते रहते हैं. ये क्या? इज इट विदाउट एक्शन? आप शारीरिक कुछ नहीं करते हैं, फिजिकली कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप मानसिक स्तर पर बहुत कुछ करते रहते हैं. So it is not without action. You are only trying to, what you are doing instead of physically, you are doing it mentally. Because simply stopping the physical action will not lead to a quietude of mind. इसलिए स्वामी जी जानते थे, क्योंकि जब मिशन स्थापना किए, his own brother disciple योगानंद जी रुके था, बहुत ही वो उन्होंने आपत्ति किया. ये सब तुम क्या कहाँ से ले आए? श्री रामकृष्ण देव तो हमेशा जीवन का उद्देश्य भगवान लाभ कहते थे, आप ऐसे काम धाम के लिए कहाँ से ले आए? सब तो बिल्कुल ठाकुर का वाणी नहीं है, संदेश नहीं है. बट स्वामी जी न्यू that it is not possible for everyone to dive deep into that kind of a contemplative life or life of meditation very easily. So although Swamiji also clearly accepted the highest goal of life as realizing that oneness or as Atman or Bhagavan Labh, सब वो भी मानते थे. But he said, first you work intensely. Through that, you completely purify your mind. Chitta Shuddhi ke liye. In fact, Shankaracharya also is very clear about Chitta Shuddhi. Shankaracharya says that you have to perform all the शास्त्र विहित कर्म. शास्त्र में जो कहा गया वो सब आपका करना ही है, लेकिन एक समय आपका ये सब काम धाम पूरी तरह छोड़ के सिर्फ भगवान की तरह भगवान मन लेना. नहीं तो जो ऐसे कोई महावाक्य के द्वारा ऐसा कुछ
only you have to contemplate of the highest, or only by resorting to those kind of ideas you can reach the highest. आपको उसमें कर्म से संपूर्ण रूप से दूर रहना है, ये वो कहते हैं. लेकिन स्वामी जी सेड द वे वी आर टुडे, यू फर्स्ट वर्क हार्ड, यू वर्क, क्योंकि कि आप ऐसे कोई निष्काम कर्म करने में, दूसरों के लिए करने में, what happens? So your own ahankara, your ego, many of the things which are great obstacles to spiritual life, they get a pounding, they get a good thrashing. क्योंकि हम लोग दूसरे के लिए करने के लिए जाते हैं, बहुत सारा हम लोग का झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है. So when you do all that, you slowly become more and more pure. You understand where is the problem, how your ego is again and again appearing and standing in the way of your spiritual goal. Then slowly over a period of time, and your chitta is completely pure, uske baad automatically in such a chitta the ultimate truth is bound to be reflected. इसलिए Swamiji was also saying so much about the idea of work. So यहाँ भी लेकिन Gita also says यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. If a person is completely established in Atman, for such a person there is no duty or there is work or anything, because really he has no mind of his own which he can fix somewhere to work. आपको तो कुछ करने के लिए मन लगाना पड़ता है ना. If a person is completely immersed only in the idea of Atman, is totally established in such a state, for such a person, the Gita says, yes, you need not. But for all others, and we need, and this all others means 99.99 to the power infinity of mankind, you can say, सबके लिए ऐसे काम करना जितना संभव करना है. So it's, but at the same time, of course, Gita also says, Thakur Swami Ji also say, इसके साथ साथ आप अपना जो बाकी साधन भी सब करना है. अदरवाइज क्वाइट ऑफन वर्क ऑल्सो कैन लीड यू कंप्लीटली एस्ट्रे, बिकॉज करते करते ठाकुर कहाँ खाते हैं, निष्काम करते ऐसे प्रारंभ करते हैं, कहाँ से कामना वासना ऐसे जुड़ जाते हैं पता भी नहीं चलता है. So we all start, many people get caught that way also. They start with a good intent, but then slowly name and power, their own preferences, इसे बहुत सारा गड़बड़ भी कर लेते हैं. All that also can happen. But so along with work, one has to work very intensely. That's what Swamiji was saying again and again. But along with that, it's also necessary to practice the other disciplines, like something towards jnana through nitya, nitya vastu, viveka, etc., or some devotional practices like japa, and also yogic practices like meditation. सबके लिए जगह है जीवन में. That is why Swamiji himself says somewhere, unless there is a harmony of yogas in your life, you are not cast in the mold of Sri Ramakrishna. आप श्री रामकृष्ण की जो इसमें मोल्ड में बने हुए मनुष्य नहीं होंगे जब तक आपका जीवन में ये चार योग की समन्वय. So of course समन्वय does not mean that all the yogas would be in equal proportion, 25% ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आपका जहाँ आपकी करने की ज़्यादा है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी सबके आपका ध्यान रखना चाहिए. So because Swamiji also says somewhere, no yoga is totally bereft of any other yoga. आप किसी योग में बाकी सबका कोई ही जगह नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जो भी करते हैं उसके अंदर बाकी योग भी धीरे धीरे आ जाते हैं. मान लीजिए आप यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप कर्म करते हैं, उसके अंदर आप बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ता है, बहुत ही अलर्ट होकर करना पड़ता है. सो दैट इज ए पार्ट ऑफ मेडिटेशन और ध्यान योगा और राजयोगा. इतना आपका अटेंटिव रहना पड़ता है, अदरवाइज यू विल डू समथिंग व्हिच इज नॉट प्रॉपर. सो जब सेवा करते हैं बहुत ही प्यार से, विद सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन, देयर द पार्ट कम्स इन, एंड नेचुरली आपको तो विचार करके ही करना पड़ता है कई बार कौन सी करना ठीक है कौन सा नहीं है. So again the idea of jnana also comes in. Like that, if you look at every yoga, in every yoga there is some way or other the other yogas find a place. लेकिन हम लोग साधारण से जिस नाम पे पुकारते हैं बताते हैं ये कर्मयोग, that means
predominantly it is centered around कर्मा और एक्शन. वही नाम देते हैं, लेकिन हर योग में बाकी योग भी कुछ योगदान जरूर है. So the everyone with a body consciousness, that's why Sri Ramakrishna also said, जिनका शरीर की प्रति नजर है, you can never say that I am that Atman and do that kind of practice. उनका भक्ति की मार्ग में ही जाना है, वही बता देते श्री रामकृष्ण. कहते हैं, so when you live in a community of people, आप एक समाज में रहते हैं, आप जब तक आपका शरीर मन की प्रति ध्यान है, नजर है, आप you are bound by body and mind. You cannot say that I will not discharge my duty to the community. So it devotes quite a number of slokas for this idea of yajna, where this is a participation. This is a complete interdependence of the entire world. हम लोग यहाँ बैठे हुए यार, ये ऑडिटोरियम के लिए कितने लोग काम किया, कितनी तरह उन्होंने सेवा किया, कितनी तरह उन्होंने त्याग दिया, अपना समय, शरीर, मन, पैसा, बहुत सारे, उसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए. So every one of our actions, every day, again and again we realize we are so much indebted to so many people. बहुत सारे लोग के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग अभी अनुभव कर रहे हैं, whatever we enjoy, that's all because of them. So I often say in many schools, ये तो बहुत elite school है, आप सोच रहे हैं आपके माता पिता पैसा डाला आप यहाँ हैं, नहीं, जो किसान आत्महत्या किया उनका खून इसके अंदर है. So everybody has contributed, and that is why you are where you are. So if you remember this interdependence, then you say that मैं कुछ नहीं करूँगा. इसलिए स्वामी जी was very clear that the monks of the mission, they should not be parasites on the society. पहले ऐसे जो था, आप यहाँ से सब छोड़ के चले जाओ, उत्तरकाशी कहाँ हिमालय पर्वत में जाओ, आपको कुछ करना नहीं है, दिन भर सोते रहो, यहाँ भंडारा होता है, वहाँ कोई सेठ आके खिला देंगे. स्वामी जी नो, यू हैव टू वर्क. इवन आप जो आपकी जरूरत है, जो समाज से आप लेते हैं, आपका समाज देना है. इसलिए रामकृष्ण मिशन में भी सारा भारत में, बाहर में भी बहुत सारा सेवा केंद्र है, जिसके माध्यम में बहुत तरह का सेवा होता रहता है. लेकिन हम लोग भी, क्योंकि हम लोग तो खुद का कोई पर्सनल आय कुछ नहीं है, इनकम नहीं है, तो समाज से हम लोग लेते हैं, समाज की देना है. इसलिए अर्जुन, a person as a member of a society had his own responsibilities and social commitments. वो ऐसे में ये सब नहीं करूँगा, अस्त्र से छोड़ के बैठना. So obviously he was not going in the right direction. So even if a person who is above the idea of body, इसलिए Sri Krishna says, I have त्रिषुलोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्यत्वं वर्तेव च कर्मणि. So he says, I have nothing to do, I have no kartavya in the three lokas, but still I work, because to set an example, मैं कुछ नहीं करूँ तो बाकी लोग क्या करेंगे. So even if a person who is really evolved, even that is a person may not do in the case of an ordinary and ignorant person, but he out of compassion. इसलिए बहुत सारे महापुरुषों भी, फॉर एग्जाम्पल ठाकुर, माँ, स्वामी जी, ये सब इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, there was no need for them to come down, meet people. स्वामी जी ऐसे दिन में 2-3 भाषण देते थे उस दिन में, या several hundred people used to come. There was not even any mic or this or that. So क्यों ऐसे किए थे? ठाकुर in spite of cancer till the last day he was guiding people. तो लोक संग्रह के लिए. So even those who have completely gone beyond the idea of body, or even realized souls, for them also, for the sake of lok sangraha, or welfare of the world, and out of compassion and love for humanity, they also function and they also participate. So they are not self-centered. So there is no binding effect of such works on such people. क्योंकि कोई आप संपूर्ण रूप से किसी तरह कामना वासना शून्य करके ऐसे कोई काम करें,
obviously that will not bind you in any way. लेकिन आप सामान्य भी इसमें कोई डाल दें अपना वासना अपना कामना, then it will bind you and that will create you problems. So that's why those who have evolved, they work intensely probably, but they are never really bound by the actions. So birth is the normal people, it's the law of life. For the evolved is an expression of love and compassion for mankind. So in one case, for normal people, all our work is self-centered, whereas in the case of evolved people, it is for the sake of others or probably God-centered. So then, still the questions of Arjuna remained. Of course, he knew that, and it was not difficult to convince him that he is a part of a society and he had obligations, उसका कुछ कर्तव्य था, वो तो समाज में रहा करते थे. So ये सब इतना तक ठीक था, लेकिन फिर भी दो प्रश्न के जवाब अर्जुन ढूंढ रहे थे, क्योंकि the consequences in a war like this, इसमें क्या है, बहुत लोग का मारना पड़ता है, हत्या करना पड़ता है. सो दो एज तो अपना आप कर्तव्य कहा सकते हैं, ऐसे कर्तव्य कहना क्या है, इससे भी क्या अच्छा नहीं है ऐसे युद्ध में नहीं जाना. आप लेना चाहते हो ले लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा करना क्या ठीक नहीं है. That's also one question, because in such a war it appears there is so much of killing, so much of bloodshed, इतना खून बहता जाता है. ऐसे युद्ध करना ठीक है ना नहीं है, कर्तव्य तो है, मानता हूं, ऐसे प्रश्न था. एंड देन सो इसमें क्या है, ऐसा कुछ युद्ध करने में क्या आध्यात्मिक दिशा में कुछ उन्नति संभव है, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है. आप अस्त्र शस्त्र लेके सबको मारते हैं, खत्म करते हैं. कैन यू रियली से दैट दिस इज फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्ट? विशेष रूप से जब उन्होंने ऐसे चित्तप्रज्ञ के बारे में सेकेंड चैप्टर में कहा, when Arjuna asked भाषा समाधि केशव सिद्धि किम प्रभाषित किमासित व्रजेत किम, कैसे एक स्थितप्रज्ञ पुरुष ऐसे कोई कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या बताते हैं. तो इन रिप्लाई से प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना स्थितप्रज्ञ सोचते दुःखेषु अनुविद्विग्नना सुखेषु तस्पृहा वीतराग भय क्रोध सुधीर्मुनिरुच्यते सर्वत्र न विस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदे प्रज्ञा. So he was extolling so gloriously. Yada samharte chayam kurmungani vasavasa. So he described it so wonderfully. The normal temptation for anybody will be, "Arey maybe aise ban ja. Why should I fight in this war and all that? Instead of that, let me become a Sthita Prajna. Because you have said so beautifully about this. Is it not better to be a Sthita Prajna? Or should I rather fight in this war?" So, this seems to be, the person, the Sthita Prajna, was completely controlled his mind and the senses, is in total control of himself. That idea seems to be far removed from a warrior, जो रण क्षेत्र में युद्ध करते रहते हैं, लोग के मारते हैं, खत्म करते हैं. Such a person, how can he really, the swadharma of such a person, how can it lead to such a spiritual excellence? क्योंकि अंत में श्री कृष्ण भी कहते हैं, सबको अपना अपना स्वरूप स्वभाव के संबंध में जानकारी होना, अनुभव करना, वही जीवन का उद्देश्य कहते हैं. How is it possible in the light of such terrible war and such participation, कैसे मैं प्राप्त कर सकूं? So इसलिए उन्होंने इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, आपका जो the idea, the doctrine of निष्काम कर्म, the action done with absolute detachment, और उसके अंदर भी वो ईश्वरार्पण बुद्धिया, जैसे ईश्वर के समर्पित, भगवान के समर्पित काम करने में जितने भी आप ऐसे हो, उसी से कोई ही आपका फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि काम वैसे ही क्या है, आप उसका मॉरल भी नहीं कह सकते हैं, इमॉरल भी नहीं कह सकते हैं. पर इतना बड़ा सुनामी आया, वो सुनामी क्या कह सकेंगे, इज इट मॉरल और इमॉरल? So work by itself has nothing
either as moral or immoral. Only the way we attach ourselves to it, then it becomes rather. Then it acquires a quality of morality. So, any work is always, there is some sense of comfort or benefit to some, or it may destroy somebody else. मैंने कहते हैं ना, वो सिंह की खाद्य, वो तो भेड़ का जीवन है. So, it can be always, all works have, in some it is very apparent. कुछ कार्य में सीधा सीधा पाते हैं हम लोग, इसकी क्या अच्छा है, बुरा है. लेकिन in many things, they are so subtle, we are not even able to see. इतना सूक्ष्म है, देख भी नहीं पाते. What is behind it, how it is really affecting someone or other. See, every second, the amount, see, not only that, every morsel of food that you consume, you are depriving so many others of one morsel of food, ना? क्योंकि आप पृथ्वी में जितना है, सबको तो पर्याप्त नहीं है. So you consume, that means somebody else goes hungry. So, it's always, there is a complete, the view, any work has to be understood in that context. इसका कौन है? So, अपना तरफ से इसमें कोई वासना नहीं है, कामना नहीं है, एब्सोल्युटली निष्काम है, और इसके ऊपर भी कोई कुछ ऐसे कोई भाव से करें, either in the idea of oneness of humanity, एक अद्वैत भाव से, नहीं तो भगवान का समर्पित जीवन समर्पित कर, ऐसे करने में आपका see, because you see, what would you say, a person का अपना जीवन के लिए पुलिस में काम करना पड़ता है. आप क्या चोर पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? चोर पकड़ के मारना तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं पकड़ेंगे, वो दुश्मनों के बाकी सब जगह में वो बहुत कुछ क्षति पहुंचा देगा. So he has to do his duty. Much worse, प्रीवियसली, अभी तो इंडिया में वो हो गया, अभी किसी को नहीं करते हैं, जो देयर इज ए पोस्ट कॉल्ड हैंगमैन, का किसी को जाके फांसी देना, वही उनका काम है. तो ज़्यादा जितना होता था उनका पैसा उतना होता था, उनका संसार उसी चलता था. सो व्हाट वाज ही डूइंग एनीथिंग moral or immoral? How will you attribute to it? So, any work can have an outer, बाहर दिखने के लिए उसका एक रूप हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आप जैसे करें. नहीं, इसलिए हम लोग को इतना बड़ा टीम अवेकन प्रोग्राम में सब काम करते हैं. नहीं, उसके अंदर हम लोग का भी कितने लोग समझ पाया, ये हम लोग जो काम कर रहे हैं इसका महत्व क्या है, इसमें हम लोग कैसे निष्काम से करें. थोड़ा भी होने में मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा कम हो रहा है, मेरा ज़्यादा समय है, मेरा आना पड़ता है, बाकी लोग नहीं आ रहे, मेरा ये है, मेरा वो है, मतलब बोलते रहते हैं ना. देन ऑल योर आइडिया ऑफ निष्काम विल बी गॉन टोटली. मेरा निश्चित रूप से मैं बिल्कुल विचार करके अपना पूरा देने के लिए आया. इसके अंदर हाँ कुछ होगा, कुछ फायदा होगा, कुछ फैसिलिटीज मिलेगी, कुछ हो सकता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से क्या भाव है, मेरी तरफ से क्या ध्यान है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज इट ऑल्सो बिकम एनी अदर वर्ड. कई बार हम ऐसे सोच रहे हैं, इसलिए स्कूल्स में इतना असर नहीं हो रहा है. क्यों? हम लोग के अंदर भी इतनी पूरी तरह सच्चाई नहीं है. वी आर ट्राइंग, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग जो प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग के बहुत आगे जाना है. तब आप मान लीजिए एक व्यक्ति, ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा भी हो जाए, उसका चेहरा देखे लोग मुग्ध हो जाएंगे. If a person is truly unselfish, has done anything truly with that spirit, वो जाके खड़े होने में जहां भी जा सकते हैं वहां असर होगा. Because it will be so apparent by looking at that man, at that person, man or woman, that he or she has done something so unique. So इसीलिए, so it is इस कहते हैं ना, एक आग के साथ साथ धुआं भी, the always is also smoke along with fire. So कुछ भी तो कहाँ में किसी को क्षति थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उसे हो सकता है. लेकिन अपना अपना जो करना है, जो जरूर विभिन्न प्रकार करना है. साधारण में धरती पे क्या करते हैं, देयर आर पीपल हु डू दिस काम्य कर्म. कोई कितने तरीका कर्म कितनी तरह हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क आर देयर. वन इज परहैप्स देयर आर पीपल हु डू विथ द लोएस्ट टाइप, और
submoral, or you can say क्योंकि compulsion like slave labor, और कई कई ऐसे को विकर्म कहते हैं जहाँ कोई किसी को खत्म करना, किसी को मार डालना, ऐसा दिस टाइप ऑफ वर्क आर ऑफ द मे बी लोएस्ट नेचर, दे कम अंडर द विकर्म और अधर्म और निषिद्ध कर्म, इसे हो जाता है. देन यू नो देर आर पीपल हु वर्क फॉर काम्य कर्म, कोई कुछ लाभ उठाने के लिए, कोई फायदा के लिए करते हैं, वो भी हो सकता है. एंड देन यू नो दिस काम्य कर्म में भी the other type is there are socially oriented action. समाज में आपका एक धार्मिक जीवन जीने के लिए जो करना पड़ता है, that they call as socially oriented. This thing, oh it is not antisocial. antisocial जो समाज के विरुद्ध जो करते हैं तो आसुरी संपद में जो भरे हुए ऐसे व्यक्ति करते हैं. लेकिन जो देवी संपद में ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति, what they do actually in a very whatever is proper, whatever the society demands, whatever their कर्तव्य is there, आपके समाज में जो करना है, जो ऐसे people have to look after their family and this and that, उनकी ऐसी कोई नौकरी भी करना है, पैसा भी लेना है, लेकिन बहुत ही ईमानदार से करते हैं, ये करते हैं. that is one type of action. So in the socially oriented action by the dharmikas, they are whatever is their actions are regulated by norms, and they have to take into consideration the needs of others also. मेरा मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कि मैं दूसरी की कुछ भी अकोमोडेट नहीं करूँगा, अपने ही करके चले जाऊँगा. That may not be a very socially accepted norm. नहीं, आपके साथ किसी को उनको भी जगह होना है, आप इतना ही हैं, आप 1 घंटे के लिए यूज करो, उनके 1 घंटा ऐसे एडजस्ट करते हैं ना. All that come as part of the dharmika type of work, dharmika type of jivas or the beings. They do that type of socially oriented work where they have to work out of compulsion for their family and relatives, etc., etc. But then this is also for individual fulfillment. अपना इसमें भी थोड़ा स्वार्थ भी रहता है, क्योंकि अपना नज़दीक जो है उनने के लिए वो करते हैं. इनले के लिए धीरे धीरे बड़े होके कोई ऐसे देशभक्त बन जाते हैं. ऐसे सोशली ओरिएंटेड काम करते करते धीरे धीरे आप एक्टिवेट की तरह, देशभक्त की तरह काम कर सकते हैं, और ऐसे फिलांथ्रोपिस्ट भी बन सकते हैं. सबके लिए, दूसरे के लिए करना, वो दान पान करते हैं, बहुत चैरिटेबल वर्क करते हैं दूसरे के लिए, वो हो सकता है. एंड देन दे कैन डू दैट टाइप ऑफ वर्क्स. बट नाउ इन अर्जुना, वो भी अपना जीवन में ऐसे कोई एक धार्मिक जीवन से उन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन धीरे धीरे करते करते ऐसे कोई उनके सामने एक समस्या आया, वो देख रहे हैं. तो यूजुअली जो समाज में जिससे के सब धार्मिक लोग जो काम करते हैं, कोई कमाई करते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ शादीशुदा करते हैं, ऑल दैट दे डू इन अ सोशली ओरिएंटेड सेंस, इवन दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अर्जुन नाउ. क्योंकि वो कहते हैं मैं समाज के कर्तव्य के रूप में, आप बोलेंगे आपके आचार्य, आपके मित्रों, आपका जो कुटुंब, सबको आप खत्म करो, ये कैसे हो सकता है? दिस कैन नॉट बी ए सोशली ओरिएंटेड ड्यूटी. वो इसने मानने के लिए तैयार नहीं है. इसीलिए उनका ये करने के लिए उनका श्री कृष्ण का वही निष्काम कर्म, वही डॉक्ट्रिन का उनका लाना पड़ा. दैट इज इसमें क्या है, वो जीवन में कुछ नहीं चाहते हैं मुक्ति छोड़ के. They are not bound by anything else. They want absolute freedom. And for them, Sri Krishna has, for such type of people, for such type of individuals, the Gita talks about the Nishkam Karma. Because otherwise, unless you really give a very high motive or a very higher direction to work, it's very difficult to justify the how and why of निष्काम कर्म. मैं क्यों ऐसे करूं? डिजायरलेस एक्शन ऐसे समझ नहीं पाएंगे. मैं कोई, क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं हमेशा उसके पीछे कुछ तो कुछ कामना रहता है. There's always a motive. When you say there's absolutely there is without any motive you have to do the highest motive. That's possible only if you bring in the concept of complete total freedom or mukti. Only with that it's possible to
uh, understand fully this idea of Nishkam Karma. Why should one work absolutely without any desire? Why should I do it? मैं क्यों बेकार बेकार ऐसे कोई कामना छोड़ के क्यों नहीं करूँगा? Whatever I do, we always do. But then, if there is an idea, so but of course, it is not possible for every individual to take this idea of highest mukti very easily. But then, slowly, as we evolve in life, as we understand the absolutely perishable nature of all that we deal with, मैं जहाँ रहते जो करता हूँ ये सब तो 2 दिन के लिए मैं कह जितनी बड़ी पदवी भी मिले क्या कितने दिन के लिए so when you slowly understand the totally unreliable and imperishable nature of this world slowly the idea of mukti or freedom dawns whereby we think हाँ ये सब समस्या की बाहर हम क्या जा सकते हैं क्या संभव है क्या then only a person can think of a higher ideal or a head so in the case of Arjuna although he was not immediately thinking of that kind of an highest mukti, he really did not want to participate in this war where he had to kill all these people. Then Sri Krishna slowly made him understand if you do this idea, if you perform this Nishkam karma, it will not only not harm you, आप जो भी करें आपको तो कोई क्षति भी नहीं है लेकिन साथ के साथ धीरे धीरे अपना स्वरूप स्वभाव आप प्राप्त कर सकते you'll also understand slowly your real nature. That is the goal of life. So, with that in view, now when the whole thing was placed before Arjuna, he clearly understood. Even if so of course, Sri Krishna had to take him through the Vishrupa Darshana, etc., where he clearly said that all these people have already been killed by me. You only have to be an instrument and all that will come in discussion. But essentially, when the whole picture was laid before Arjuna, Arjuna clearly understood that it is just only an act, it's act of killing or anything. Because if I do not do it with any desire for myself, not only it will not affect me, it's also possible for me to evolve in my spiritual life. जब वो कन्विंस्ड हुए हाँ इसी से मेरा एक आध्यात्मिक उन्नति आध्यात्मिक परिपूर्णता संभव है then he completely surrendered to Sri Krishna and accepted his idea. Of course, there is more to this introduction, a little more technical. We'll discuss maybe next week because of rain. Very few people could come today. But of course, people are attending, devotees attending from outstation locations could do. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Mission.